देखो फिर से वही क्या होता है ना कि मैं अपने दिमाग में तो काफ़ी बातें कर लेती हूँ आप लोगों से, लेकिन जैसे वीडियो ऑन होता है मैं भूल जाती हूँ कि क्या बात भी करनी थी। सो ये तो ऐसे ही चलेगा। तो खैर, वेलकम टू माय व्लॉग। आखिर मुझे समय मिल गया और आपको पता है समय क्या है? इट्स 12:42 AM ऑफ 25th ऑफ जुलाई। मैंने व्लॉग शुरू किया था मॉर्निंग 12:30 बजे, आई मीन आफ्टरनून 12:30 बजे, और अभी रात हो गई है। Yeah, training is really keeping me on the toe, and there are lots of things that you have to take as a role, as a fellow and as a teacher. तो मुझे कई सारे messages आए. It's today is not about the vlog, it's more about the TFI, like Teach for India, and I have got lots of messages from my subscriber and my friends regarding what it is actually. तो क्यों ना आज उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें की जाए। नमस्ते, मैं हूँ हिना फिरदौस और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 3 मोटी मोटी बातें। तो पहले हम जानेंगे कि TFI, टीच फॉर इंडिया, है क्या। सेकंड में हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ज्वाइन होने के लिए क्या क्या तरीके हैं। तो अगर पहली बात की जाए तो TFI यानी Teach for India is a fellowship program for teaching which is running across 7 cities in our country. The major cities which it's running is Delhi, Mumbai, Pune, Ahmedabad, Hyderabad, Bangalore and Chennai. Yes. और ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शाहीन मिस्त्री, जो हमारे CEO हैं, उन्होंने फाउंड किया है. It's come under the big umbrella of Teach for All, which is running across various countries. You can get all the information in the Teach for All website. Particularly if I'm talking about Teach for India, तो मैं यहाँ पे आई बटन में आपको बता दूँगी, आपको एक लिंक भेज रही हूँ जो कि टेड टॉक है शाहीन मिस्त्री का, where she is talking about why we need to reimagine our society and our education in particular, because our education makes our children and their brain. ये आपको टीच फॉर इंडिया के अंदर ये सब सिखाया जाता है, आपको एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है कि आप एज अ लीडर, एज अ टीचर किस तरीके से चेंजेस ला सकते हैं हमारी सोसाइटी में. तो इसका एक विज़न, हर कंपनी का एक विज़न और मिशन होता है, तो मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप एज आ एम्प्लॉय अगर किसी कंपनी में जाते हैं और आप उसके विज़न और मिशन से रेजोनेट करते हैं, तो मेरे ख़्याल से आपका माइंड, आपका बॉडी उसके साथ आपको हेल्प करता है उसके साथ काम करने में. लेकिन कहीं भी डिफरेंस होती है, इट इज़ ऑलवेज़ अ इश्यू. तो TFI का जो विज़न है कि we believe that one day all children will attain an excellent education, which is a very beautiful way to put up and to think about it. हम अपने आप को बहुत छोटी सी चीज़ें, इंसान के अंदर गुरूर, एरोगेंस बहुत ज़्यादा होता है और वो अपने आप को भगवान समझने में ज़्यादा देर नहीं लगाता, लेकिन थोड़ी सी भी पावर अगर आप किसी इंसान को दे देते हैं वो भगवान बन जाता है. तो एज अ लीडर इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट दैट यू आर समथिंग वेरी ग्लोरीफाइड पर्सन, यू डोंट नीड टू बी दैट. You need to take charge for yourself, your life, and what you want to make the change that you want to see. Like, मुझे ये कपड़ा पसंद नहीं है तो मैं ये कपड़ा नहीं पहनना चाहने के लिए मैंने क्या किया. Of course, I go to the store, I talk to my parents that look, I am not comfortable in this cloth and I want to wear something which I'm comfortable in. You took charge. That is the leadership. Leadership means there are 8 C's. I'm going to talk about that, all those nitty gritties and lots of description about it in the next vlog. And the mission is to build a movement of leaders to eliminate education inequity. And that is required. I remember why this is, like, when I read this line, I went back in my class in school in Ramakrishna, where my teacher one day came and
बच्चे शरारती होते हैं, एंड द टीचर शी सेड कि मतलब बच्चे शांत नहीं हो रहे थे, एंड वी ऑल वेर लाइक मेकिंग सो मच नॉइस, एंड शी वाज लाइक कि देखो, एंड वी लाइक कि मैम कोई मॉनिटर दीजिए। तो बोलते हैं कि कितने मॉनिटर रख दूँ, तुम तो हल्ले वैसे भी करो, हल्ला वैसे भी करोगे, तो जस्ट बी मॉनिटर ऑफ योर ओन एक्शंस एंड देयर विल बी नो नॉइज़ इन द क्लास। और मैं शायद उस समय 6th या 7th में थी, and that really stuck with me. I don't know which class I was, but that word stayed with me for very long, and still it's staying with me. So you have to be the change what you want to see. um, well, if you have to put in a way, like currently, if you want to join, like if you're resonating with me, whatever I'm trying to tell you, it's not possible to say everything in just 10-minute vlog. I need really 30 minutes to talk out more than that. So I think it's not a like it's not a sprint, it's a marathon. तो हम धीरे धीरे सब बातें सीख जाएंगे. I'm like 2020 cohort, so अभी 21 और 23 के लिए already admissions are enrolling. There is the dates sheet, you can see there are the different rounds of admissions going on. So अभी round 1 6 September का deadline है, and the result will be out on the 16th of September. So you have time to work on that, and the application link is already in the description, so you can check out the application. Now why like I have already talked about कि you are going to be a school teacher, you are going to work in a school which is running in a low income society or community, और वहाँ पे आपको as a fellow, as an integrated part of that school काम करना होगा. Like वो school आपका नहीं हो जाएगा, but you have to own that school as your own, and you have to work along with the other elements in there. Like there will be school teachers, there will be headmasters and lots of people, and you have to make your own space, and you have to tell them कि देखो, this thing is not working, it's not going to go for a longer period of time, and we need to make some kind of changes. तो ये एक broader aspect है जो कि टीच फॉर इंडिया काम कर रही है. साथ में आपको ऐसे ही सिलेक्शन के बाद स्कूल में नहीं धकेला जाएगा. यू हैव टू वर्क एज अ ट्रेनी फॉर 8 वीक्स. तो इसमें अगर आपने बीएड किया होगा, बैचलर इन एजुकेशन, तो आपको पता होगा कि अगर नहीं भी किया है, आप जस्ट फ्रेश ग्रेजुएट हैं, तो हाँ, बैचलर्स होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इफ़ यू आर हैविंग अ बैचलर डिग्री, यू कैन अप्लाई फॉर दिस फेलोशिप. और एज बाउंड उसके बाद नहीं है. लाइक आफ्टर बैचलर्स यू आर नॉट एज बाउंडेड. I don't think so. Rest, you can check out the website if I'm not able to clear any doubts. For this time, it is all virtual because institute training happens in Pune, but due to COVID-19, we all stuck at our home, so it's happening in virtual way, and it's an 8-week training program. अभी तो हमारा कल्चर एंड पेडागोजी वीक इज़ डन, सो वी आर गोइंग टू गेट अटैच विद आवर school and work with them, and that is going to be really exciting. How are you going to join this Teach for India? That is the third point. So what is the selection process? So there are 3 stages of selection process. So the stage 1 is the forms and the online test. ऑलरेडी मैंने बताया कि 6 सितंबर इज़ द लास्ट डेट. तो हाँ, आप प्लीज़ वहाँ पे जाके अपने आप को एनरोल कर लीजिएगा इफ़ यू लाइक टू जॉइन दिस. और उसमें आपका टेस्ट लिया जाएगा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में. दे आर गोइंग टू आस्क व्हाई यू वांट, लाइक आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीच फॉर इंडिया, व्हाई यू थिंक दैट यू आर अ लीडर, एंड व्हाट वर्क यू हैव डन एज अ लीडर इन योर लाइफ. Or there is also going to be, I think, yeah, like they are going to ask your documents regarding your graduation and all those things, your percentage and how it was. तो उसके बाद आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा लाइक 16 सितंबर जैसे इसमें है. you will get the results out by that time. And congratulations if you have cleared that stage 1, because it's a very long process. Even I was not able to, like many of my friends say that they were not able to clear that stage 1
Even I was once like I applied in the end of my BTech in 2016, and I was not able to clear that. I don't know why I didn't was not able to, but it's okay. Then this time I got into stage 2. It was a phone interview where the staff member from TFI will reach out to you and they are going to communicate about like they want additional information about you and why you want to come and work with them, and they will go give you some scenarios or something to talk about. It's a very nice phone interview. I really enjoyed that process. And third and final stage is assessment center. Trust me, जो मेरे साथ हुआ, ugh, मैं बस I came from Delhi that time and I was in my hometown. यहाँ पे it's a very small village, so internet is a big crisis. Another thing is electricity, and that time we were getting lots of power cuts. So while giving the interview there was no power at my home, and I don't know, my parents are very supportive. Even my parents, my sister was very supportive to make me do this. I really enjoyed the assessment center. And assessment center we get to do lots of activities in as a group. We have to work in some scenarios, and that depends, like it depends upon whose panel you are getting. But my panel, whatever I got, was very nice, very creative. They helped us to bring out the lots of creativity, curiosity, courage, and there will be also a personal PI, personal interview will be there with one of the staff member. तो ये सब करके your stage 3 will get done, and if you are getting selected for this, you are going to get a call from them, or maybe you are going to get yeah, call and offer letter they are going to send with that sign and all. So that is the, and congratulations that you'll get selected. But I think if you are a youth or anywhere in the position in your life where you are thinking कि your life is not worth of living, or you have something that you want to and you can give to society, or you want to find yourself, like you want to find कि नहीं यार मुझे मैंने लॉ पढ़ा लेकिन मुझे नहीं करना है लॉ, लेकिन कुछ और किया जा सकता है क्या. तो इस तरीके की चीज़ें रियली हेल्प यू टू मेक योर सेल्फ, लाइक टू रीच यू आउट. And mostly whoever there are currently 500 fellows in this year, it is amazing that situation of like running everything on virtual platform. Mera matha, it's like it's blown. It's like how they are doing everything online. We are just training right now, so I'm just overwhelmed and very happy right now. तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड किया जाता है, और कुछ और बातें होंगी तो मैं आपको फिर बताऊंगी. आप मुझे प्लीज़ कमेंट में नीचे बताइए कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या नहीं, और मैं और क्या बातें आपको बताऊं. वैसे तो मैं अपना तो बोलूँगी, लेकिन फिर भी इफ़ यू लाइक टू टेल मी दैट व्हाट यू वांट टू know more about this TFI, and why teaching, why education, who am I. If you want to know more about me, just write down in the comment. DM me in Insta for more. The Insta link is here, and it is at the rate of Dihina Firdaus. तो आप वहाँ पे मुझे DM कर सकते हैं. मैं बहुत एक्टिव हूँ इंस्टा में, नहीं तो फेसबुक भी चलेगा. There also I'm very active and posting lots of creative contents. बाकी तो YouTube है. You can subscribe to me, subscribe to my channel, and please do that because that encourage me to make new content every day. और मैं प्रोग्रामिंग के कोर्सेज पे भी काम कर रही हूँ. So there are lots of things running around me, so I'm very excited, and let's see how the things will unfold. Till then, salam, namaste, bye bye.